हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आया हूँ वन मोर कोर्स ऑन ऑप्शन सेलिंग। जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं, विथ लिमिटेड कैपिटल ऑप्शन सेलिंग कैसे करें। इस कोर्स में आपको इन डिटेल बैक टेस्टिंग के साथ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी आप जो आवाज़ सुनेंगे वो ओरिजिनल क्रिएटर की है। थैंक यू। So equity is like an investment, right? Where you invest the money for 6 months, 7 months, 1 year, something. But also we call derivative. आपने FNO में सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इसको डेरिवेटिव मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज डिराइव्ड, करेक्ट? Because whatever price is going on in cash market or 50, based on that only it is getting derived. So it is called derivative. Okay. We have equity versus derivative difference so that you can get it. See, equity market is also called as cash market. इसको हम FNO market बोलते हैं. Future notes. Both are part of derivative market also. And then it's like वायदा कारोबार भी इसको बोलते हैं हिंदी में, अगर आप सुन रहे हैं न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे तो वायदा कारोबार, right? In terms of name. And then what is the main difference is like you can hold whatever time you want. So if you have bought Reliance, you have bought some Tata Steel or Motors, right? So you can that particular script. जब तक आपको रखना है, nobody is to like exit it whenever you are doing the full payment. But derivative market में क्या होता है? You have it whatever, so whatever you have bought or you have sold exited on last Thursday of December credit. You cannot hold the derivative positions more than. So suppose you are buying for April expiry, so you hold it April last Thursday of the April. So let me show you. So suppose this is Reliance. This is Reliance in cash market. Same thing you can do it in options also, right? It is like future. You can see it April future. Correct? You can be in future and options. Similar way we have, right? But whenever you are buying this April future has to be exited before last Thursday. Same way you can go to options also. If you are bullish on Reliance, then what you do? You can buy options also. So suppose it is trading around 2600, you can opt. Whatever it is future, it is options. If you go by any, you have to square off by last Thursday. But Reliance आपने दिया बोलेगा नहीं. Okay. Difference. So you can whatever 10 years, 20 years, 1 day, 2 day, whatever equity market. But here you have to examine. The next difference is you buy whatever quantity market में क्या होता है, जितना भी quantity आपको buy करना है, buy कर सकते हो. 10 quantity, 20, depend your आपके account में 5,000 रुपए. So you can buy only 2 Reliance. So you can buy 2 quantity. But that way you have to buy in lot only. That means every stock has a lot size. To do, you have to be in particular, then only you will be buying. Let me show you. तो यहाँ पे देखो रिलायंस अप्रैल है ना, तो इसको अगर आप बाय हो गए, you have lots. 250 का लॉट साइज है. दैट मीन्स यू कैन नॉट बाय लेस देन 250 क्वांटिटी. अगर 250 से जाए तो 300 आप नहीं कर पाओगे. इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 250. दैट मीन्स 500, 150. फ्यूचर के केस में भी लॉट साइज सेम होगा और ऑप्शंस के केस में भी लॉट साइज सेम होगा. सेम लॉट साइज 250. Okay. Now
इक्विटी मार्केट में क्या होता है, ओनली बाई, वी हैव सीन दैट एक्सेप्ट इंट्राडे, इंट्राडे में आप सेल कर पा रहे थे, राइट, शॉर्ट सेलिंग हमने सीखी बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग। बट डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, यू कैन बाय एंड सेल बोथ, यहाँ पे बाय एंड सेल बोथ कर सकते हो, और यू कैन होल्ड दैट पोजीशन फॉर नेक्स्ट डे। जैसे आपने शॉर्ट टर्म किया होगा, मीडियम टर्म, तो उसको आप होल्ड कर पा रहे हो, राइट, लेकिन इक्विटी मार्केट में शॉर्ट करके आप होल्ड नहीं कर पाओगे। बट इन डेरिवेटिव मार्केट दैट इज देयर where you can hold your position for very next day, at least last Thursday hold कर ही सकते। So that is a major advantage. Suppose you want to make money in short market, so you cannot make only intraday. Intraday में suppose करो गया, लेकिन 330 को तो इसमें क्लोज करनी पड़ेगी ना। तो अगर 330 के बाद भी आपको लग रहा है कि और नीचे जा सकता है, so you can hold those positions in intraday of cash market. You have to take positions in future options, तभी आप कर पाओ। So that is the major advantage, I should say. तो सपोज लग रहा है रिलायंस आपको नीचे ही जाएगा नेक्स्ट 1 मंथ में, इट मे गो डाउन 100 टाइम्स, सो यू नॉट डू थ्रू कैश मार्केट। कैश मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे, राइट, तो क्या आपको रिलायंस का फ्यूचर या ऑप्शंस को लेना पड़ेगा। तो फ्यूचर आप इसको शॉर्ट कर दो, सेल कर दो, रिलायंस जितना नीचे जाएगा ओके। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज व्हाट, ऑल स्टॉक्स लिस्टेड ऑन एनएससी अंडर कैश मार्केट, मतलब जितने भी स्टॉक्स लिस्ट होते हैं एनएससी में वो कैश मार्केट के अंदर आते हैं। 2000 stocks are listed, and then in BSE there are more than 4000 stocks are listed. All those comes under cash market. But derivative market में पूरे all stocks नहीं है, only 180 stocks comes under it. मतलब all the stocks does not come under derivative market criteria. So only one in market, which we are discussing so many times, right? That 180 stocks they are in a you have to go and do like short term trading also in those, or medium term trading also. So these are OMT stocks where you can do future also. It's not allowed, and this is slowly increasing. Like initially it used to be only Nifty 50 stocks, then slowly it became 100, then 120, then 160. So last month only it has become now 110. So will increase slowly, but right now number is 180. So SEBI examines every month or 2 months, and they revise this stock names. They are revising each and every quarter. So you might see that next quarter it will be 2, but not all stocks are coming under. Okay. Now next difference is like you have to pay the whole amount to buy. रिलायंस आपको खरीदना है, आपको कैश मार्केट, रिलायंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सपोज 10 क्वांटिटी बाय करनी है, तो यू हैव टू हैव हाउ मच कैपिटल, 10 अगर करना है तो आपको 26,000 रहना पड़ेगा आपके अकाउंट में, तभी आप कर पाओगे। सेम अगर 100 क्वांटिटी लेनी है, दैट मीन्स यू नीड इन योर अकाउंट हाउ मच, 2,65,000। सेम अगर इसका लॉट साइज देखा जाए तो हाउ मच इज द लॉट साइज, रिलायंस का आप जाके देखो शेयर में 250 का लॉट साइज, तो 250 अगर आप रिलायंस को यहाँ पे बाय करोगे 250, how much capital is required, almost 6,63,000. That means almost around 7 lakh is needed if you want buy 250 quantity of Reliance in cash market. But same thing if you go through futures or options market, it is very less. So देखो same, suppose you want to buy futures of Reliance, then see how much, 1.5 lakhs. So that is the reason people are coming to future options. This is the main reason, guys. Why? Because margin required is very less. अगर same काम आप इक्विटी मार्केट करने जा रहे हो तो आपको 7 लाख रिक्वायरमेंट है, सेम काम आप यहाँ पे कर रहे हो तो जस्ट पेइंग द मार्जिन मनी यू कैन, बहुत कम, मतलब 1.5 लाख का काम, मतलब इनडायरेक्टली आप 7 लाख का माल 1.5 लाख रुपए में ले रहे हो। तो सपोज करो यहाँ से रिलायंस समझो 50 पॉइंट ऊपर, तो 50 गया तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 250 into 50, दैट मीन्स हाउ मच, 12,500 रुपया। सो 12,500 रुपया और 149 लाख रुपया आपके कैपिटल लगे, तो आपका ROI बहुत ज्यादा हो जाता है। 1.5 लाख रुपए पे आपने 12,000 रुपए का प्रॉफिट किया, दैट इज ऑलमोस्ट 8%। बट सेम थिंग अगर आप ये कैश और 50 रुपीज ऊपर जाता है तो ROI कम होगा, 250 लेने में ऑलमोस्ट 6,63,000, तब 7,12,000 का प्रॉफिट होगा अगर 50 पॉइंट ऊपर गया, तो उसमें ROI क्या 7 लाख के हिसाब से ओनली 2%। ओके,
So why it is more? Because 5 times we are getting the leverage, almost 5 times we are getting on each roughly. So जो भी काम आपका 5 लाख में हो रहा है वो आपका यहाँ पे 1 लाख में हो जाएगा, 7 लाख है तो 130 में हो जाएगा, समथिंग लाइक ओके. सो दैट इज वाई ओके. और ऑप्शंस के थ्रू जाओ तो और कम लगेगा. जैसे सपोज यू आर बुलिश ऑन रिलायंस, व्हाट कैन डू, यू कैन बाय कॉल ऑप्शंस 2700 का कॉल ऑप्शन. इसका मतलब ये होता है कि यू आर टेलिंग दैट रिलायंस विल गो बियॉन्ड 2700. उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 14,000 बस पे करके ऑप्शंस हो सकता है. तो देयर आर टू वे, वन इज फ्यूचर, वन इज ऑप्शंस. यू कैन चूज एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज. तो फ्यूचर के थ्रू जाओगे तो 1 लाख 1.25 लाख लगेगा, थ्रू जाओगे तो और कम लगेगा. बट इसमें क्या है कि आपको ये प्रीमियम देना पड़ता है 59 रुपीज. तो अगर 2700 तक नहीं गया तो दिस लूज. बट अगर 2700 के जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो नाउ यू गाइस मस्ट हैव अंडरस्टूड. इसमें ऑप्शन में बाय करने के लिए स्ट्राइक प्राइस क्या रखना है इसमें? वो डिपेंड करता है, वो तो आपको ऑप्शंस में समझना आना पड़ेगा. एटीएम लेना है ना, वो आगे डिस्कस करेंगे. Okay guys, so this difference is clear. You have to pay the whole to buy in order to play in the cash market. Here you can just buy and sell by just paying the market. Now इक्विटी मार्केट में क्या करते हैं गाइस? यू बाय द एक्चुअल शेयर्स. एक्चुअल मतलब रिलायंस अगर आपने बाय किया है तो 2 दिन के बाद आपके होल्डिंग में जाता है. देन यू लिटरली सी दिस इन योर डीमैट अकाउंट. आपको आता है that Reliance has been this much quantity has been credited to your demat account, right? But same thing is not applicable in this future and options में क्या होता है? It is like a contract. You are telling by buying contract कि ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा. Whatever you are telling, it could, if you are buying, that means you are telling that Reliance will go up. अगर ऊपर नहीं गया तो ये मंथ एंड तक आपको में हो या लॉस में हो आपको क्लोज करना पड़े. जैसे मंथ एंड में ये 2700 तक चला, 30 पॉइंट मतलब 250 7,500 मिल जाएगा. लेकिन 50 पॉइंट डाउन गया तो आपको 50 इंटू 250 12,500 का लॉस भी होगा. तो जो भी लॉस प्रॉफिट है आपको मंथ एंड तक सेटल करना ही होगा. बिकॉज दिस इज नॉट फिजिकल थिंग. फिजिकल यहाँ पे डिलीवरी नहीं मिलता. दिस इज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट. guy is telling that I am bullish on Reliance, so I will buy future. Another guy is telling I am bearish on future, so that's why I am selling future. एक बंदा buy. So this is zero sum game. If that guy is losing, then you will be winning. If you are winning, then रिलायंस ऊपर जाएगा इसलिए उसने फ्यूचर बाय किया है और आप नीचे जाएगा इसलिए आपने सेल किया. Understood? So this is how it works. So this we buy the actual shares, we just buy and sell contract. यहाँ पे केवल contract buy selling होती है डेरिवेटिव मार्केट. यहाँ पे actual shares की buy selling. Next, so these are the main difference. So I hope you got a rough idea how. And so what you can do in terms of assignment, you can go check the lot size of required margin in cash market as well as derivative market. मतलब आप निफ्टी 50 स्टॉक्स का सबका जाकर चेक कर सकते हो. जैसे मैंने रिलायंस का भी बताया